NTA, National Testing Agency in India. Toughest exam or the most number of children who sit for the exam is NEET. That is what the misconception is, because NEET is conducted only once in a year. So approximately 25 lakh children, that is the last year's statistical data, appeared for the exam. Only 1 lakh children become doctors. And maybe on a repeat basis, 1 more lakh can become doctors. Out of that, 20,000 is free seat and 80,000 is paid seat. What about the 23 lakhs? Similarly, when JEE exam is conducted twice a year, एक session में कितने लोग बैठते हैं exam में? Any guesses? 16 लाख था पिछले साल, 16 lakhs. 16 lakhs से सर, 15 से 16 लाख. और double time जो होगा ना तो 32 लाख. There are more people who are appearing for better. There are more people appearing for JEE because it is happening twice a year, and very few people are aware of lot of things in JEE because they think only JEE is for B.Tech or going for IIT. As you know, many of them, that it is not only for IIT, it can be for NIT, it can be for IIIT, it can also be for GFTI, it can also be for REC. Now, certain REC, as you know, regional engineering colleges converted into various autonomous colleges. So there are a lot of colleges, a lot of information that we are going to share. And even if you have some information, please let us know. It's something which we have missed out. We are here to learn. We are here to collaborate. We are here to discuss. It should not be a one-sided discussion. That's what we expect. Now, the topics that today we are going to cover is how to study. We have got eminent faculties from ADCI. Mr. Kaif sir is there to talk about maths. Rishi Jadhav sir will be talking about chemistry along with Sadia ma'am. And Mohsin sir and Asad sir is going to talk about physics. We have Sonali Bansal ma'am. She's a career counselor, so she'll be talking about what are the 3 different paper patterns and what is JoSAA counseling. So we'll be covering 2 parts. One, how to study, what to study. The time is very less. What to study for paper 1 and what to study for paper 2. That means one exam is before your board exams and one is exam after the board exams. How do you plan accordingly? And we also should know that JEE is not about percentage, but it is about percentile. So that also has to be known to you. What is the difference between percentage and percentile? Okay. So, JoSAA counseling is also something which very people know. How many of you know the full form of JoSAA? If you can write, you can use your chat GPT and you can write the full form of JoSAA. Please use AI, because when you listen to the lecture, it should be interesting. You should do your homework. So whenever you are finding any keyword, like in this slide, the keyword is JoSAA. So you should always write. Yeah, definitely, we can conduct a session for NEET next time whenever MFIRD platform, Abrar Saif sir will ask us to do and the team. So anybody who can tell me what is JoSAA? So the introduction to JEE mean, as you know, JEE means Joint Entrance Exam. Normally people think it is about engineering. And also remember that JEE main score is a criteria for various admissions in regional engineering college also, or state level colleges, other than the regular CET. In Maharashtra, we have got a 30% quota in all colleges, especially private colleges. You should also know that in NIT or IIIT or GFTI, there is a lot of cutoffs. Especially, somebody should type in the chat box about tuition fee waiver scheme. Very few people are aware of this. If you have made a EWS certificate, economically weaker section, you can have a quota on the basis of JEE. Also for handicapped, especially disabled people. So your documentation, Sonali ma'am will all be talking about it. Now the exam is in the month of January. When is it starting? Kaun se date se JEE start ho raha hai? 22nd. 3 subjects we are covering: physics, chemistry, and maths. It's a CBT based exam. What is the full form of CBT? Computer based test. About JoSAA, Sonali ma'am is going to speak. Yes, Sonali. JEE examination is in 2 parts. First part is JEE mains. JEE mains, which is conducted twice. JEE mains session 1, session 2. What is your score in JEE mains?
is the score considered for JEE Advanced. And JEE Advanced is conducted by JoSAA, that is Joint Seat Allocation Authority. So your advanced examination is basically from so JEE Advanced examination is basically from JoSAA, and through JoSAA you can apply for various colleges. IIT examination is only through JoSAA, but there are few more colleges which are included through this counseling session, that is NITs, IIITs, and government funded technical institutes, right? So let's start. Like first thing, JEE mains first. JEE mains is conducted twice in a year, that is in the month of January and in the month of April. This is in JEE mains also, there are two papers. There is JEE mains paper 1 and JEE mains paper 2A, 2B. Everyone is aware about JEE paper 1, but 2A and 2B paper is very, like, many students don't know about this. And this is also very important. JEE paper 1, when you apply for this examinations, you get admission in engineering colleges. When you apply for JEE paper 1, admissions for technical courses in engineering colleges. But paper 2A is for bachelors of architecture. There are many IITs which have architecture as a course. So if you want to take admission in IIT for bachelors in architecture, you need to apply for 2A, paper 2A. And if you want to apply for IIT colleges for bachelors of planning, this is also a course which is coming up. See, education is becoming very specific. बहुत ही ज़्यादा specific हो रहा है education. If you see, AI specific हो रहा है, right? There are many engineering where it was previously mechanical engineering, instrumental engineering. Now it is getting divided, cut into specific departments like robotics, only robotics and all. So you also need to plan your graduation in specific courses. So bachelor's of planning is also one of the course that is coming up and which will have demand in future. Bachelor's of planning is basically you need to plan. You are taught to planning of, like, say an industry. If there is an industry which is setting up, to plan for that. If there is any big city construction area getting setting up, so you need to plan. So in bachelor's of architecture and planning, there is one more additional paper that you need to appear for, which is drawing. Drawing is the paper that you need to appear for in paper 2A and 2B. Also, one mistake that students make is, if you apply for paper 1, there is fees. When you apply for paper 1, एक particular amount होती है जो आपको fees as a application fees भरनी होती है. Paper 2A के लिए भी there is additional fees. Like for example, open category boys, this was 1,000 rupees for paper 1, 1,000 rupees for paper 2A. But please understand, if you are applying for paper 2A, वही 1,000 rupees में आप 2B के लिए भी apply कर सकते हो. For 2B, you don't have to pay anything additional. If you are applying for 2B, 2A के लिए भी कोई additional नहीं है. So 1,000 rupees, please, if you are applying for 2A, apply for both papers, 2A and 2B, both papers. कोई additional आपको नहीं देना है उसके लिए fees. And paper भी जो होता है, paper होता है. And paper जो होता है, वो भी same paper होता है. Right? So I'll suggest कि जब आप apply कर रहे हो 2A के लिए and 2A के लिए अगर आप apply कर रहे हो architecture के लिए, 2B के लिए भी apply करें. And this is very important. You need to have your plan B, because what we at ADCI believe is engineering is good. Doing engineering as your career is very good, but college matters a lot. आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो, आप कौन से आईआईटी से कर रहे हो, वो इक्वली मैटर करता है. इफ यू आर नॉट गेटिंग गुड कॉलेज, व्हाट इज योर प्लान बी? आफ्टर ऑल एग्जामिनेशंस यू कैन नॉट डिसाइड कि अब क्या, अब तो मैंने और कोई एग्जाम नहीं दी, अब क्या. सो यू नीड टू कीप योर backup plan also ready now only. So if you are little bit also interested in drawing,
go for architecture or bachelor's of planning as your plan B. Okay? So this is one thing that we wanted to inform you. I informed you already that there are many IITs, NITs and all in which you get admission through JEE examination. But there are few more colleges which take admission based on JEE mains score also, like Indian Institute of Petroleum and Energy. If you have scored good, these colleges are not listed in counseling form. When you clear your JEE mains and you are selected for JEE Advanced, and if you clear your JEE Advanced, you need to have you need to go through counseling process. But this college is not added in counseling form. These colleges have their own entrance exam also and take JEE score also for admission. So, for example, Indian Institute of Petroleum and Energy take admission on JEE score. Rajiv Gandhi Institute of Petroleum and Technology take admission on JEE score. So, if you score good and you are not getting qualified for JoSAA counseling, you can try these institutes also for admission. ISER, till last year, ISER, double ISER, if you want to become scientist and if you want to make your career in research work, ISER भी एक college था, there are 7 ISERs in India. ISER भी एक college था which used to consider JEE examination score for admission. But from this year, last year, they have limited to their own entrance exam, that is IIT examination. So yes, there are few more colleges that accept JEE examination. So as we were mentioning, if you don't get qualified for IIT, but you have scored good in JEE, you can use those scores for different colleges admission also. Because from which college you are doing your graduation matters a lot. बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप आपका ग्रेजुएशन जो है वो कौन से कॉलेज से कर रहे हो. One more thing, you can also join defense through JEE score. How many of you knew this? You can join defense through JEE score. Defense, you need to appear for entrance exam NDA. NDA, National Defense Academy. NDA examination. You need to apply for NDA examination. If you clear NDA examination, only then you are selected for SSB. SSB is basically Services Selection Board. 5 days interview session. तो अगर आपने written exam clear किया तो ही SSB के लिए होगा. There are 10 lakh students who appear for NDA examination. Only 8,000 students are called for SSB. That it is that tough. But if you score good in JEE examination and if you have scored more than 60% in your PCM, physics, chemistry, maths of board exams, you can apply for defense through JEE score. And you don't have to give any separate examination. You are directly called for SSB, that is interview. And the course you will do in defense is basically engineering. If you want to become an engineer, why not to become engineer and serve the nation as engineer? Like if you, I'm not sure, like, but if you have seen Rustam movie, Akshay Khanna, Kumar went to other country to investigate the ship, the sea vessel. कि उसका condition क्या है? Can India purchase that vessel? So this is the work, this is the job profile of engineer people in defense. If we are purchasing any new arms and ammunitions, engineers see that is this of that level that we should purchase or not. So you can become engineer and serve the nation as Colonel Brigadier through technical entries. So there is chance to join defense also based on JEE score. Schedule basically. कोस्ट गार्ड को भी JEE का स्कोर चलता क्या? कोस्ट गार्ड को नहीं चलता सर. कोस्ट गार्ड नहीं, सिर्फ टेक्निकल एंट्री जो है उसमें. जी सर. के बाद भी जा सकते हैं ना. ग्रेजुएशन के बाद भी टेक्निकल एंट्री होती है. अगर आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेते हो तो ग्रेजुएशन के बाद भी टेक्निकल एंट्री होती है based on your final year score. If you have scored good, you need to apply for TGC, Technical Graduate Entry.
उसका फॉर्म भरना पड़ता है, एंड इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड यू आर डायरेक्टली कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। 5 years का इंटरव्यू कोर्स रहता है, वो 5 days का इंटरव्यू रहता है। इफ यू गेट सिलेक्टेड, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, एंड देन यू आर सिलेक्टेड फॉर इंडियन एयरफोर्स डिफेंस बेसिकली। Okay. About the schedule, JEE main session takes place twice a year, so January and April. अभी अप्रैल का जो एग्जाम है, जनवरी का एग्जाम है, that will start from 22nd of January and 31st of January से सेशन 2 के फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे। सेशन 2 के फॉर्म्स जो है 31st of Jan से ओपन हो जाएंगे। So please do not miss applying for paper 2A and paper 2B that we just mentioned. Paper 2, paper 1 में basically it is physics, chemistry, maths. Paper 2A and B में it is more about maths, aptitude and drawing. Maths, aptitude and drawing. So drawing जो होता है paper 1 में, paper is like section 1, 20 marks maths, 20 physics, 20 chemistry. हम ये पेपर पैटर्न था बेसिकली। सर 2 मिनट में पेपर पैटर्न बता देती हूँ, फिर मैथ्स का सर बता देंगे पूरा। पेपर 2A जो है उसमें ड्राइंग भी एक सब्जेक्ट रहता है, एंड सी पेपर 2A में मैथ्स है, एप्टीट्यूड है, विच इज 20 and 50 क्वेश्चंस का। But paper 2, this will be computer based examination, but paper 3, part 3, that is drawing, will be pen and paper. You will be given paper drawing sheet, and on that sheet you need to draw. There will be 2 questions of 100 marks, so you need to draw and submit. So part 3, drawing part, is paper and pen examination basically. Okay, similar with paper 2B, the part 3 is planning, and that will be pen and paper examination. And if you appear for paper 2A and 2B, both papers, you get 3.5 hours to solve your paper. If you are appearing for paper 2A and B, both papers, you get 3.5 hours for paper. Any questions related to JEE examination paper pattern and which colleges you get admission in? Any questions, please? Any questions on JEE paper patterns course, or like what are the subjects? Paper 2A, paper 2B question. स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं इस एग्जाम। 12th appearing students भी दे सकते हैं। अभी जो 12th appearing बच्चे हैं जिनका अभी बोर्ड एग्जाम रहेगा, एग्जाम बेसिकली उन्हीं के लिए होती है। 12th appearing and 12th pass, ये 2 है जो दे सकते हैं एग्जामिनेशन। फर्स्ट का तो अभी एग्जाम है, बट 31st of January से सेशन 2 के फॉर्म्स ओपन होंगे। JEE मेंस सेशन 2. If you have not appeared for mains examination, you don't get qualified for advanced. So what we at Anis Academy suggest, paper session 1 and session 2 दोनों ही सेशन आपको देने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि दोनों में से कौन सा इजी पेपर आएगा, दोनों में से आप कौन से पेपर में ज्यादा स्कोर करोगे। बहुत सी बार बच्चे होते हैं कि दोनों क्यों देना है, मैं कोई भी एक एग्जाम देता हूँ। नो, यू शुड अप्लाई फॉर बोथ द एग्जामिनेशंस। आपको नहीं पता, क्योंकि जो 24 लाख के करीब बच्चे एग्जाम अपियर करते हैं JEE मेंस 24 लाख के करीब बच्चे अप्लाई करते हैं। ओनली 2,50,000 स्टूडेंट्स विल गेट सिलेक्टेड फॉर एडवांस्ड। आपको नहीं पता आपका पेपर 1 इजी आया है कि पेपर 2, सो बोथ पेपर्स अप्लाई करने चाहिए। बट अभी इस बार का पेपर 1 तो क्लोज हो चुका है, पेपर 2 का फॉर्म विल बी ओपन फ्रॉम 31st of Jan. You should apply for this exam. चलिए मैम, ये हमको बताओ कि 3 पार्ट रहते हैं उसमें, प्लानिंग, प्लान बी, प्लान सी। ये बताया सर, वो 80% लोगों को पता नहीं है कि लोगों ये को बताया। बताया? यस सर, बता के होगा क्या बताना है? बताकर हो गया, बताया कि पेपर 2 क्लियर हो गया। जी सर। Any questions on paper 2A, paper 2B or paper 1?
पेपर टू में क्या जो है 2 पेपर रहते हैं? पेपर टू में भी पेपर पेपर 2 में भी 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। मैथ्स पार्ट 1 होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट पार्ट 2 होता है और ड्राइंग पार्ट 3 होता है। जो आर्किटेक्चर का होता है वो भी 3 पार्ट्स में होता है, मैथ्स, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ड्राइंग। और ड्राइंग का जो पेपर होता है दैट इज पेन एंड पेपर। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है एंड पार्ट 3 जो होता है वो पेन एंड पेपर होता है। आपको एक ड्राइंग शीट दी जाती है एंड उसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ड्रॉ करके देना होता है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में नेगेटिव मार्किंग है, दैट इज मैथ्स एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। बट ड्राइंग वाला जो होता है 100 मार्क्स का, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एनी क्वेश्चंस? Just to inform that there are many more examinations that you can apply for when you are in 12th standard. Actually, एक और मिथ है कि बोर्ड एग्जाम के बाद सब एग्जाम्स होती है। नहीं, बहुत सारी एग्जाम्स ऐसी ही होती है जो आपके 12th के बोर्ड एग्जाम के पहले होती है। फॉर एग्जाम्पल क्लैट विच इज फॉर लॉ, आपका यूसीड एग्जामिनेशन विच इज फॉर डिजाइनिंग कोर्स इन आईआईटी। आईआईटीज में डिजाइनिंग कोर्सेज भी होते हैं जिसके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं यूसीड। तो ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं जो 12th के बोर्ड के एग्जाम के पहले आप अपीयर करते हैं। तो इस चीज के बारे में भी अगर आपको पूछना है, यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। Madam, there are a few questions in the chat box. Can you please look at them? ड्राइंग का सिलेबस है, बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन। दे वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर ड्राइंग अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आर्किटेक्चर में बहुत कुछ ड्राइंग भी रहेगा। आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट ड्राइंग, राइट? तो दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्राइंग। बहुत ही मिनिमम सिलेबस होता है। विल शेयर विथ यू सिलेबस ऑल्सो ऑफ ड्राइंग। अगर आपको बेसिक लाइक 1 वीक भी आप स्टडी कर लो ना, दैट्स ओके। तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स का होता है। बहुत ही बेसिक आपको एक हाउस स्ट्रक्चर या ऐसे स्ट्रक्चर बनाना होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड सबमिट करना होता है। एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इट इज इवन मोर इजियर। For B.Tech, it is physics, chemistry, maths. We have teachers with us who will give you guidance on physics, chemistry, maths studies now. तो वो भी आपको पूरा गाइड करेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसपे आपने कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए एंड पूरा ब्रीफ आपको बताएंगे। क्वेश्चन से चैट बॉक्स में 1-2 क्वेश्चंस आंसर कर रहे थे। पेपर 2B जो है वो बेसिकली बैचलर्स ऑफ प्लानिंग करके कोर्स है विच आईआईटी कंडक्ट्स। तो पेपर 2B is for bachelors of planning and this course will be in high demand in future, like real estate is booming like anything. तो आपको बैचलर्स ऑफ प्लानिंग भी आगे बूम रहेगा। तो अभी आपके जो भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आफ्टर सर फिनिश वी कैन टेक दिस क्वेश्चन आंसर्स। Good morning. Here Cap sir. I'm going to represent mathematics. Hold on for a minute.
Of the calendar of that use this calendar because mathematics calendar is very important. It is called short algorithms. With the chat box, you can go and find out what is that called. Tips and tricks by research. Mathematics has got calendar. And in mathematics, if you have to understand mathematics, you should know ring structure. We of us this for speak about it. Continue. Okay. Okay, sir. Joining the PDF. My agenda is overview of 2025 JEE Main. What should we do before few hours the exam? What should we do during the exam? The time management. Basically, most of the students appear for paper 1, so my orientation will be towards paper 1. What is the nature of questions? Then syllabus of mathematics. Some tips and tricks from my sides. So overview 2025. Why NDA take the examination? Sonali, I already told you about this. Why NTA take the examinations? Now, number of papers already told by the Sonali ma'am. Now the number of questions in paper 1 from past to past year, we get 90 question overall in 3 papers, 30 question for each papers. But from now this year, we will get 75 questions only, 25 questions per papers. So option will be eliminated this year, okay? Right? Subject ask, you should know, you already know PCM, time allotted 3 hours, mode of examination CBT already told. Now, हम लोगों को एग्जाम से कुछ देर पहले क्या करना चाहिए बिफोर फ्यू आवर एग्जाम्स? अगर आपने सही से तैयारी किया है तो बिफोर 12 hours you should stop the learning, okay? Then take 6 to 7 hours good sleeps. Before examinations, you should not talk with anyone about anything, okay? You should not think about futures. That will suppose that what will going to happen, what will do, my future will be going towards where. You should not think about this, okay? And always keep your cool. That means in Hindi you should say bindas. Now during examinations, when you go inside the examination hall, you should keep your mind clear. And you should not be panic. You should not be put negative energy in your inside you. You should always flow positive energy, okay? And during the examinations, leave the questions. You don't know about this. Anything, if you don't know anything about it, you should leave that questions as it is. Do not invest your time on this type of questions. And try to read all the question in first pass. पहले पास में सारे क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए. All the questions. Suppose that you are solving the mathematics, you should read all the 25 questions in first pass. And I think you will get at least 4 questions in 25, which will be easy.
and you can solve easily. Okay. In first pass, you will solve questions and read all the questions. In second pass, now in first pass, you can locate where is your interest, where is your area, and where you can solve the questions. So just target on that question and solve the moderate questions. You should know go towards difficult questions. Okay. Never solve the moderate question first. Okay. If you have a time after solving the moderate questions, then you can go towards difficult questions. Okay. Otherwise, limit yourself on up to your moderate questions. Now, time management. You should not invest more than 45 minutes on chemistry. You should only invest 45 minutes on chemistry. Limits your 60 minutes for physics if the physics question is simple, and give 75 minutes for mathematics. You can sometime, I think in 4 hours, physics will be difficult one time, and three times you will find mathematics difficult. Okay. So if you find physics is difficult, then you should give 75 minutes on physics and 60 minutes on mathematics. That should be a strategy for time management during the examinations. Now the paper pattern, according to weightage, there will be 2 sections. I will tell you the section later, but 40% question will come from 11th syllabus and 60% question will come from 12th syllabus. Already told you there will be 75 questions, 25 from each subjects. Now, I will tell you about mathematics. Mathematics has 25 questions, 20 MCQ natures, which will be all compulsory. From this year, 5 is numerical based, which will also compulsory from this year. Okay, there will be no options this year. And each question will carry 4 marks. And if you solve that questions, you will be rewarded by 4 marks plus positive. And if you solve question wrongly, you will be rewarded by negative marks -1. You will leave the question that will no attempt, you will get 0 marks for that questions. On the nature of questions, you will find 20% easy questions, 60% moderate, only 20% क्वेश्चन विल बी डिफिकल्ट. जो क्वेश्चन पेपर का किसी भी कंपटीशन में इंडिया में नेचर है, वो 20% इजी बनते हैं, जो हर बच्चे सॉल्व करे. अगर थोड़ा भी पढ़े दिल लगा के पूरे साल, तो 20% हर बच्चे सॉल्व करे, उसके लिए बनते हैं. नाउ द मेन सेक्शन जो है वो मॉडरेट क्वेश्चन है 60%. Those who will solve the moderate question will get the entry for admissions. And those who will solve the difficult parts will be rankers. Okay, rankers, everyone cannot be a ranker, so ranker is the different things. Our requirement will be complete. After our requirement will be complete from easy questions and moderate questions. So if you solve easy question and moderate questions, it's enough to get entry in examinations. Now there will be a single concept question. Suppose that a question you will find the same chapters, and there will be multi-concept questions. That means a question will be implemented more than one chapter concepts. That's called multi-concepts. And some questions will be option elimination. Suppose that you are solving the integrations, different integrations, and you get the difficult parts, that questions. Okay, you can solve by option eliminations. How? Suppose you will differentiate all the options. The option which get differentiation as an integrand part, that will be your answers. हमारे पास integrations है जो कि बहुत difficult है indefinite के, और solve नहीं कर सकते directly, तो हम option eliminate करके कर सकते कि उसको हम solve करें
ऑप्शन को डिफरेंशिएट करे, जिस ऑप्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेंट से मैच करता है वही मेरा ऑप्शन आंसर हो जाता है। सम क्वेश्चन आंसर होते हैं कि जो आप पार्शियली सॉल्व करें, आप पार्शियली सब्स्टिट्यूट करें, और जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होते हैं क्वेश्चन जिसमें ना आप पार्शियल सॉल्व करके पार्शियल पुट कर सकते हैं, आपको फुल्ली सॉल्यूशन चाहिए, दैट मींस डिफिकल्ट क्वेश्चंस। नाउ द सिलेबस में सेट रिलेशन फंक्शन यूनिट वाइज SRA, जिसमें मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इनइक्वालिटी, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलेशन एंड इट्स एप्लीकेशन मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस एंड एप्लीकेशंस मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आते हैं। होल्ड ऑन। डिफरेंशियल इक्वेशंस मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं। देन वेक्टर्स 2 क्वेश्चंस। यस सर, anyone asking anything? Then 3 dimension maximum 2 questions. Sequence series, coordinate geometry, the very important sections that you will get 4 questions, and every question is important in JEE, because if you solve 12 questions, that means you will get 48 marks. On 48 marks you will get in mathematics, I hope 90, more than 99 percentile. And Anil sir was saying that what is the difference between Yes, yes. percentile and percentage. परसेंटेज So I और will tell you. परसेंटाइल वो लोगों को पता नहीं होता, वो समझाओ। Percentage is based on marks. Percentile is based on the number of candidates. Suppose that we get rank 1 in 1000, so our percentile will be 100 percentile. Suppose that we get rank 2, so in 1000 I get rank 2, so 100, so 1000 minus 2 divided 1000, this will be a percentile. So percentile will be calculated from back side. It will be based on your rank and number of the student appear in examinations. So when you get percentile 98, and you should say it's a good marks, I think I will not say that good marks. It depends on the candidates appear in the examinations. Okay. Now, I will only explain one questions by tricks. Suppose that I have written one questions of complex number. I have Z1, Z2, 2 complex number. Mod Z1, that is 9, and second complex number, that is mod Z2 minus 3 minus 4 iota equal to 4. Then minimum value of Z1 minus Z2. Mod Z1 is a constant. This is a circle nature. So mod Z1 is a circle. It will be a circle at the center origin. And the second is also a circle. It has a center 3, 4. And the distance between these circle will be calculated. The minimum point. Yes sir, hold on. नहीं सर, अभी क्वेश्चंस अपन पीपीटी शेयर कर देंगे, इतना टाइम नहीं रहेगा, बाद में करेंगे। Okay. So I cannot solve on this screen right now because we don't have much time. So I only speak orally. अभी फिजिक्स, अभी केमिस्ट्री भी बाकी है ना, फिजिक्स भी बाकी है। So we will calculate minimum value between these two circles. That will be our solutions. Okay. In the next questions, this is the nature of circle. This is stately, and is every time told the student that you should remember that if you have z mod of z minus z1 upon z plus z minus z2 is equal to constant, this will be always a straight line. Otherwise, it will be a circle. So here it will be a straight line. Okay, and we will find the straight line. We will get the equations, whether it will be option A or option B. Clearly, we can find here option A or option B will be the answers. Option C, option D cannot be the answers. Okay, it cannot be the circle. So that's about it from my side. Now chemistry sir will be take over now.
what that understand is the paper pattern. पहला वाला स्लाइड लगाओ सर आपका पेपर पैटर्न का, कितने क्वेश्चंस करना चाहिए, कौन से चैप्टर्स करना चाहिए. I can tell you that I can watch that if you do 7 chapters, Okay, so it easily you can suppose get a that good percentile. आपने कैलकुलस बहुत ही, सपोज दैट किसी बच्चे ने प्रोबेबिलिटी के पास पड़ गए, उसके जार में की प्रोबेबिलिटी करने हैं, प्रोबेबिलिटी बच्चे रैंकर ही करते हैं जेई में, तो जनरली प्रोबेबिलिटी को आप नहीं पढ़ने चाहिए उसके पीछे. अगर आप खुद जानते हैं कि मैं एवरेज स्टूडेंट्स हूं तो उसके पीछे नहीं पढ़ने चाहिए. आपको कैलकुलस और ज्योमेट्री ये 2 सेक्शंस के पीछे पढ़ने चाहिए. अलजेब्रा कॉमन सेंस होता है, तो कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन इन दिस मार्केट, इन दिस वर्ल्ड. तो कॉमन सेंस की चीजें अलजेब्रा है, जिसके पास कॉमन सेंस है वो कितना ही पढ़ेगा, और कॉमन सेंस नहीं तो अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे. जो कंसेप्चुअल पार्ट्स हैं, वर्केबल पार्ट कहते हैं हम उसको, वो ज्योमेट्री एंड कैलकुलस है. ज्योमेट्री कैलकुलस से टोटल यू विल गेट 15 क्वेश्चंस and you will solve 12 questions from this. You will get good percentile in maths. So think about it. You should not go behind probability and all the chapters of algebra. You should go behind the geometry as well as calculus. This is my point of view for the JEE main. Geometry के लिए they should start from 8th standard. ये भी बताओ. Circum center, in center, Yeah, for geometry, you should think about then suppose that a student learn in 9th class. So from 9th class, the property of triangle, property of squares, property of rectangle, property of circles, and property of polygon. You should remember these points. Then you will be able to solve the geometry. This is the main thing. So 9th and 10th geometry, you should know, go behind the proof of the properties. You should learn properties, understand properties, and use as properties. Okay. So 9th class and 10th class is the very important concepts for your basic building blocks to solve the higher questions. If you don't know the properties of 9th and 10th class, you cannot solve. Hold on. Anyone asking anything? So always think about the geometry, that we have to keep the properties in our mind of 9th class and 10th class. That should be the points for geometry. Okay. Chemistry Then you वाले will be किधर able सर? to solve the questions of geometry. And for calculus, you should learn first functions. Functions should be learned in detail. If you don't know the function in detail, you cannot understand the calculus of JEE Main or Advanced or any good competitive exams. Okay, that's is the main point. Thank you. सोनाली मैम बात कर सकते हैं उनको कि परसेंटाइल में नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना. सोनाली मैम, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ डू यू नो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए क्या करना चाहिए. उसका एक स्किल होता है, उसका एक टैलेंट होता है. आप कौन से बुक फॉलो करते हैं उसका भी. ऋषि सर उसको बोलना चाहते. हाँ ऋषि सर बोलो ना, बात करो. स्टार्ट किया ऋषि सर ने. Till that time when the teacher changes, you can ask something. Okay. So the question is that कि how to avoid negative marking. So negative marking को अगर avoid करना है तो हमें particular हमारा जो strong zone है, जैसे physics, chemistry और maths में उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर फोकस किया जाए. और अगर कॉन्फिडेंट आपको क्वेश्चन का आंसर एंड तक लेके जाते हो, तभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ऑप्शन सिलेक्ट करें. नहीं तो उसमें तुक्केबाजी करेंगे तो फिर
जैसे सर ने कहा कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, उसमें ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल जेईई मेंस एग्जाम में भी इस साल से 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ईच सब्जेक्ट को आपको 25 क्वेश्चंस आएंगे। वी हैव टू नॉट सॉल्व ऑल 25 क्वेश्चंस। फर्स्ट आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी का कट ऑफ क्या आता है। अगर आपका किसी ड्रीम कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो स्पेशली जो ओपन कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका कट ऑफ हाई रहता है। तो उन्होंने, अगर हमने हर सब्जेक्ट से 8 क्वेश्चन को भी टारगेट किया आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 फ्रॉम फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, then also we can score a good percentage or a good percentile in JEE mains examination to get our dream college or to qualify for JEE Advanced examination. So myself, Sadhav, I will represent the chemistry subject to you. Yes, Sonali ma'am and Keb sir mentioned the paper pattern, the timing, MCQ types questions and numerical ability questions. So I will quickly revise. In January month from 20 to 22nd of January, we have JEE mains examination. So this examination is conducted in 2 parts, that is paper 1 and paper 2. So I will talk about paper 1, that is PCM. So as you know, everyone, physics, chemistry and maths paper consist of, from this year, 25 questions. Out of that, 20 questions will be MCQ type and 5 questions will be numerical ability questions. So this will be your paper pattern. These questions we have to solve in 3 hours. So Cap sir also mentioned in his PPT how much time we have to spend on each subject. So our subject is chemistry. So as compared to physics and math, chemistry is comparable, easy if we focus on major area. Like in our subject, maths part is also there, theory part is also there, and conceptual part is also there. So those students who think we can score or our maths ability is good, so we can focus on our physical chemistry, because the physical chemistry weightage in chemistry is 37%. But those who afraid of maths, those can score in inorganic and organic chemistry, because organic and inorganic chemistry comprise of 63% in JEE examination. There is no numerical part in organic and inorganic chemistry. We have to just go through theory parts and the reactions that are covered in organic chemistry. So basically, if I let you know, you are now in the last phase of your class 12. So you gone through your whole syllabus. So particularly what we have to do in our last phase, that I will let you know in 10 to 5 minutes. So focus on your major zones that you have covered in your 11th class and 12th class, the chapters that are you are in good in the particular chapters. For example, if you are enough good in physical chemistry, mark the question that are come from physical chemistry and try to solve physical chemistry questions if you are in good in that. Some students have good enough in organic chemistry, so you can focus on organic chemistry. We have to try at least 10 out of 25 questions. We have to solve 8 questions so that we can clear our cutoff for open or OBC category, because the cutoff for other reserve categories is very low. That is approximate 44 percentile for SC, VJ or NT, and according to last year data for OBC category it was 84 percentile. So to get 84 percentile or more than 85 percentile, just we have to focus on minimum 20% easy questions that they will ask in JEE examination. Okay, so all the points that we have
that we want to discuss are covered by Kaib sir and Sonali ma'am. If you want ask anything in chemistry, you can ask me. Okay, there is a question. Easy way to learn chemistry. तो देखो केमिस्ट्री को इजी लर्न करने के लिए मैंने जैसे बताया कि केमिस्ट्री में मैथ्स और फिजिक्स की तरह आपको कैलकुलेशंस या न्यूमेरिकल्स नहीं होता है. केमिस्ट्री में आपको तीनों पार्ट्स पूछे जाते हैं. जैसे थ्योरी भी पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट भी पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे. सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, कि आप मैथ्स अच्छे से करते हो या थ्योरी पार्ट अच्छे से करते हो या रिएक्शंस अच्छे से करते हो. जो आपकी स्टडी आपको बताएगी आपने अभी तक जितने मॉक टेस्ट दिए या आपका परफेक्ट एरिया कौन सा है, परफेक्ट जोन कौन सा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एग्जाम में आपने किन क्वेश्चंस को टारगेट करना है. आई थिंक आई एम क्लियर और यू गॉट योर आंसर. Is there any question from your side? Now physics sir will guide you on physics topic. अभी हमारे मोहसिन सर आए, फिजिक्स बताएंगे. वी विल बी टॉकिंग अबाउट फिजिक्स. सोनाली मैम, इन बिटवीन अगर आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं ना. हाँ, अपना जो पीपीटी अपने बनाया था उसको डिस्कस कर सकते हैं मोहसिन सर होने के बाद. देखिए सोनाली मैम है. बेसिकली वही एक और चीज जो हम लोग बता रहे थे, सर ने शुरू की थी कि डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रिजर्वेशंस होती है. JEE एग्जामिनेशंस में जो है रिजर्वेशंस है. SC/ST कास्ट का रिजर्वेशन है. इकोनॉमिकल बैकवर्ड वीकर सेक्शन EWS, अगर आपका EWS का सर्टिफिकेट है, दैट इज इफ योर इनकम इज लेस देन 8 लाख रुपीज, you can create EWS certificate and you can attach at the time of form filling. JEE Session 2 के forms जो है, that is going to start from 31st of January. So you still have time. If you don't have documents, you can make your documents, you can keep your documents ready by 31st of January. फॉर्म जब आप और भरते हो तभी आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं. इफ यू फिल योर फॉर्म, यू सबमिट योर फॉर्म, you give examination, and after that if you tell कि नहीं मेरे पास तो EWS का फॉर्म सर्टिफिकेट है, they are not going to accept it. When you are filling form, when you are applying for examination, that time you need to attach your documents. EWS से tuition variant fees, that is if your income is below 8 lakh rupees, you can also create tuition variant fees documentations and keep ready. And when you are applying for counseling forms, you can attach that document. So documents are equal, because अगर हम लोग last time का 2020 में जो JEE की एग्जामिनेशन हुई थी, उसका अगर कट ऑफ देखें, can anyone tell me what was cut off for open category? 2024 JEE mains cut off for open category. 91% time. 91. चैट बॉक्स में किसी ने लिखा कि नहीं, मुझे देखना है. Can anyone tell me what was cut off for open category JEE cut off? एडवांस के लिए जो कट ऑफ था 2024 का कट ऑफ क्या था? It was 91 percentile. And EWS जो है
जनरल कैटेगरी, यस, ओपन कैटेगरी एंड जनरल कैटेगरी सेम। तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था दैट वाज 91 परसेंटाइल। व्हाट वाज कट ऑफ फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी? ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी का कितना था? गूगल कर सकते हैं आप, और गूगल कर सकते हैं। सी इंटरैक्टिव रखते हैं आप, और गूगल कर सकते हैं। कट ऑफ वाज 81 परसेंटाइल। 91 परसेंटाइल एंड 81 परसेंटाइल में 10 परसेंटाइल का डिफरेंस आता है। जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक 10 मार्क्स ऑल्सो। अगर आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर ज्वाइन कर देते हो तो आपको सीट एडवांस के लिए सीट जो है क्वालिफाई कर सकते हो आप। So this is that important. So you should know where do you stand, how much is your family income. अगर नहीं है तो फिर आप EWS का सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हो। This will also help you for tuition waiver. Tuition waiver fees is basically जो कॉलेजेस में ट्यूशन फीस होती है वो आपकी वेव ऑफ हो जाती है। यू ओनली नीड टू गिव बाकी का जो है रेसिडेंशियल एंड मेस एंड ऑल का फीस। एंड दिस इज वेरी गुड स्कीम दैट गवर्नमेंट हैज गिवन। सो इफ यू आर एलिजिबल फॉर ट्यूशन वेवियर फीस भी, तो आपको ये डॉक्यूमेंट रेडी करने चाहिए। नॉट ओनली फॉर JEE, दिस डॉक्यूमेंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर CET एग्जामिनेशन। हर स्टेट अपना खुद का इंजीनियरिंग का CET एग्जामिनेशन लेता है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र MHT CET एग्जामिनेशन। You can keep this documents ready for those examinations also. NEET examinations, there are so many NEET examinations में भी reservations होते हैं। You can keep this document ready for all the examinations that you are applying for in 2025. So 10 minutes में आपको Good afternoon, guys. Sheikh Mohsin is here, and I belongs to one of the greatest enemy of JEE exam, that is physics subject. बच्चों बहुत सारे प्रॉब्लम्स, सबसे पहले बच्चा JEE इसीलिए देने से डरता है क्योंकि वो डरता है कि उसका एग्जाम कैसा जाएगा या फिजिक्स को कैसे फेस करेगा। तो सिलेबस बताकर मैं बोर नहीं करूंगा। अभी वो सिलेबस वगैरह सारी चीजें आपको सोनाली मैम, उसके साथ साथ ऋषिकेश सर और कैफ सर बता चुके हैं। हम लोग फिजिक्स के कुछ मेजर इश्यूज के बारे में बात करेंगे जहां पर हमको प्रिपरेशन करने की जरूरत है। उससे पहले सम टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज आपको पता होनी चाहिए। पहले जो भी क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे हैं उन क्वेश्चंस के तरफ में ज्यादा फोकस करके उनको सॉल्व कर लीजिए, और जो टफ टॉपिक्स है उनको अवॉइड किया जाए तो वही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इफ यू आर मच प्रिपेयर्ड, अगर आप इतना प्रिपेयर्ड हो चुके हो जिससे आपके सारे एग्जाम्स क्वेश्चंस हो पाए, दैट विल बी ग्रेट। बट अगर क्वेश्चंस हार्ड है तो उसके ऊपर में ज्यादा टाइम वेस्ट करना सही बात नहीं है। इवन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट, बच्चे बहुत सारी कॉमन मिस्टेक करते हैं प्रिपरेशन करते समय पे। उसमें सबसे पहला मिस्टेक ये रहेगा कि बच्चे एनसीईआरटी को अवॉइड कर देते हैं। सो इट इज अ क्लियर कट इंस्ट्रक्शन फॉर यू टू नॉट अवॉइडिंग, डोंट अवॉइड एनसीईआरटी। और बहुत सारे बुक्स जैसे HC वर्मा बुक पढ़ने लग जाते हैं, और भी अलग अलग जितने भी बड़े बड़े दिग्गज बुक है वो सारे बुक के ऊपर में बच्चे ज्यादा फोकस करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी एनसीईआरटी को सबसे पहले खत्म करना चाहिए, क्योंकि वो आपको उतना स्किल्स डेवलप करवा के देगा जिससे आप आगे की बुक्स को अच्छे से पढ़ पाए। डायरेक्टली बड़ी बुक्स के ऊपर में जंप करना वो हमारा टास्क और भी ज्यादा टफ बना देते हैं। दूसरी चीज, अगर कहीं पर अगर हम लोग स्टक हो गए, कुछ क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चंस के ऊपर में स्टक हो गए और हमको ऐसा लग रहा है कि 2-3 मिनट के ऊपर में ये क्वेश्चन हमारा टाइम ले रहा है, सो अवॉइड दैट क्वेश्चन। उसको क्वेश्चन को उस जगह पे छोड़ देना चाहिए। और कुछ टॉपिक्स हम लोग ऐसे स्किप कर देते हैं जो हम हमारे कन्विक्शन के हिसाब से लेते हैं कि ये वाला टॉपिक नहीं पूछा जाएगा, या आपके कुछ टीचर्स बताते हैं कि ये वाला टॉपिक नहीं आने वाले। बच्चों को सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब उनको ये बताया जाए कि ये टॉपिक नहीं आएगा। जो टॉपिक उनको इंपॉर्टेंट बोला गया उसको छोड़ने के अलावा वो लोग वो टॉपिक पर ज्यादा खुश होते हैं, जिसमें वो लोग ये बोले कि ये टॉपिक छोड़ देना चाहिए, तो उसमें बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं बच्चे। तो टॉपिक स्किप ना करें। जो भी चैप्टर का या फिर वेटेज दिया हुआ है आपको सिलेबस के हिसाब से, हर साल JEE NTA कंडक्ट करता है और उसमें फिर वो अपने सिलेबस भी ओरिएंट करता है। मैं सिलेबस का ओरिएंटेशन भी आपको दूंगा, उसी हिसाब से आपको वेटेज के हिसाब से काम करवाना पड़ेगा।
ये बात को ध्यान में रखिए। अगर फिजिक्स के फंडामेंटल चीजें जो रहेगी उसके ऊपर में याद रखना है हमको। पेपर पैटर्न के हिसाब से पिछले साल ऐसा हुआ करता था कि 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस हमको मिला करते थे और 10 क्वेश्चन जो थे वो न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप क्वेश्चंस हुआ करते थे। लेकिन अभी इस साल ऐसा हो चुका है कि यहाँ पर आपको सिर्फ 5 न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगी और 5 के 5 आपको कंपल्सरीली सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। इस 20 क्वेश्चंस आर कंपल्सरी एंड 5 क्वेश्चंस वो भी कंपल्सरी रहेंगे। दूसरी चीज ये कि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। मेन प्रिपरेशन के टाइम पे ये बात याद रखो कि आपका पेपर जो रहेगा वो सीबीटी बेस्ड होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, तो उसमें मिस्टेक्स कैलकुलेशंस के लिए हमको मिस्टेक्स होते हैं, वो कैलकुलेशन सब लोग अवॉइड को करना है। म्यूट कर दे बोलो प्लीज, म्यूट ऑल ऑफ यू, देन ओनली यू विल बी एबल टू कंप्यूटर लिसन टू मोहसिन सर, अ वेरी गुड फिजिक्स सीबीटी टीचर। बेस्ड पेपर जो होता है जेडब्ल्यू का, अकॉर्डिंग टू दी गूगल अगर आप उसमें करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पे स्क्रीन पर एक कैलकुलेटर आपको मिलता है, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होता है जिसके अंदर में आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वाले बेसिक टर्मिनोलॉजीज उसमें कर सकते हैं। मेक को यूज ऑफ इट। क्वेश्चन सॉल्व करते समय पर अपना कोई भी कन्विक्शन के हिसाब से ना जाए तो बेटर है। देखो ये जो मैं एक सबसे मेन चीज बोलना चाहता हूँ ऐसे एग्जाम्स के बारे में जिसमें निगेटिव मार्किंग होती है, बच्चों ये पेपर रिजेक्शन का होता है, नॉट फॉर सिलेक्शन। ये कट गया। नहीं, board exam marks will not affect your NEET and JEE percentile. Remember that. Board exam you have to get 50%. 75% स्कोर करना कंपलसरी है बोर्ड एग्जाम में। हेलो सोनाली मैम, हाँ सर। वो बोलो ना, कई लोगों का एडवांस निकल गया क्योंकि मेंस में तो स्कोर कर लिया लेकिन बोर्ड में स्कोर नहीं कर पाया। बताओ ना, स्ट्रेच करो उसको। हेलो हाँ सर। अगर JEE जो है, अगर आपको IIT में एडमिशन चाहिए, एडमिशन के लिए obviously JEE mains and JEE advanced clear करना is very important. After that counseling forms and all, but with that you need to score minimum of 75% in your board exams. Aggregate marks जो हैं आपके minimum 75% होने चाहिए, only then you get admission in IITs. So yes, your board exams are equally important for IIT admission. So, Yes, मैं उस टॉपिक पर था। बच्चों याद रखो, जो भी क्वेश्चंस में जिस भी पेपर में निगेटिव मार्किंग होती है वो पेपर कभी भी सिलेक्शन का नहीं होता, ये बात याद रखो। दैट पेपर फॉर रिजेक्शन। एनटीए चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा निगेटिव मार्किंग में अटेम्प्ट करें और बाहर हो जाए। इसीलिए अपने कन्विक्शन के हिसाब से आंसर सॉल्व नहीं करने हैं। जब भी हमको ये लगे कि हमारा अगर रेशो 80-20 का रेशो अगर बैठ रहा है, अगर 80% कन्विक्शन है कि वही आंसर हो सकता है, देन एंड ओनली देन गिव द आंसर, अदरवाइज कीप दैट टॉपिक। अगर 50% भी आपको समझ में आता है कि 50% का अगर कन्विक्शन है तो लीव दैट क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों आपको कट ऑफ निकालने के लिए बहुत ज्यादा मार्क्स की जरूरत नहीं पड़ती है। याद रखो, परसेंटेज और परसेंटाइल का बहुत बड़ा इशू है। बच्चे परसेंटेज, अगर हम लोग बोल रहे कि ओपन कैटेगरी के लिए 91 परसेंटाइल कट ऑफ लगा था तो बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें 91 परसेंटेज लेकर आने। नो, दिस इज नॉट 91%। याद रखो, आप मोटा मोटा अगर आप 90 प्लस मार्क्स भी अगर लेकर आगे 300 में से, देन यू विल गेट दी कट ऑफ मार्क्स। ये कट ऑफ मार्क्स आपके लिए हो गए, इतने में आपका पेपर निकल जाएगा। इस बात को याद रखो। परसेंटाइल एंड परसेंटेज के बारे में बेटरली आपको सोनाली मैम बाद में अच्छे से समझा देंगे। मैं अभी अपने सिलेबस की तरफ में थोड़ा सा मोटिवेट रहता हूँ। याद रखो, कुछ चीजें याद रखो, आपको मोटिवेट रहना है हमेशा। जब भी डिमोटिवेशन हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस फील्ड के अंदर में क्यों आए थे। दूसरी, रेगुलर बेसिस पे स्टडी करो, 7 to 8 आवर्स आपकी स्टडी होनी चाहिए। डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। जिस दिन जो भी डाउट है, जो भी मेंटोर आपको पढ़ा रहे या जो भी मेंटोरशिप में आप हो, अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो वो डाउट जिस दिन पढ़ रहे उसी दिन क्लियर कर देना सबसे बेस्ट थिंग होती है। और कंसिस्टेंसी, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं 10 दिन कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर रहा हूँ और 1 महीना फिर आराम कर रहा हूँ, तो ऐसे जेडब्ल्यू का एग्जाम नहीं निकलता है। आपको डेली बेसिस पे रोज 7-8 घंटा रोज स्टडी करनी है, जिससे आपका एग्जाम सही होगा। कुछ मेजर टॉपिक के बारे में बोलने से पहले मैं सिलेबस के जो भी फिजिक्स का सिलेबस होता है उसमें कौन सा वेटेज है, किस टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है, उसके बारे में बात करता हूँ। याद रखो,
बच्चों जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर चार्जेस के बारे में जितने भी हम लोग बात करते हैं, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट, दीज आर द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। ये लगभग हमारा 30% सिलेबस कवर करता है बेटा, 30% सिलेबस कवर करता है रेगुलर बेसिस पे जेडब्ल्यू के एग्जाम में। जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया, लाइक सेमीकंडक्टर्स हो गया, दीज आर दिस थिंग्स। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि जब भी आप प्रिपरेशन करें, आपका जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के ऊपर में ही फोकस किया जाए। लाइक मॉडर्न फिजिक्स भी अगर आप कर लेते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में आएगा आपका मॉडर्न फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स एज वेल एज दिस रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट भी अगर आप कर रहे हो बच्चों, तभी भी आपका 20 to 30% सिलेबस वहां पे कवर होता है। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के 3 क्वेश्चंस मतलब लगभग वो 10% का सिलेबस आपके पास में लेकर जाता है। तो किसी बच्चों का अगर मैकेनिक्स थोड़ा सा वीक है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर में फोकस करे, किसी बच्चों का अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर वीक है तो वो थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एज वेल एज न्यूक्लियर के ऊपर में फोकस करे। इन्हीं चीजों के बारे में मैं बोलूंगा। पहली चीज ये कि बच्चे जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो उनको पता होता है कि उनको कौन से वाले टॉपिक हार्ड जाने वाले, तो उन चीज को एक्सेप्ट करो। आप अपने ईगो के खिलाफ, ईगो के तरफ जाकर कि नहीं मुझे ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, वो वाले पार्ट्स आपको अवॉइड करने हैं। बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाने चाहिए बच्चों, इसको बात याद रखो। और ये कुछ सिलेबस का ओरिएंटेशन है जो सिलेबस जेडब्ल्यू ने लॉन्च किया था इस साल। तो ये जेडब्ल्यू की पीपीटी आपको मिल जाएगी बच्चों, इस पीपीटी के थ्रू जाकर देख देना है चीजों को। मैं मेन उन चैप्टर्स के ऊपर मैं आपको मार्क करके देता हूँ जिन चैप्टर्स पे आपको मेन फोकस करना है। ग्रेविटेशन के लगभग 2 क्वेश्चंस आपको हर साल कंपलसरीली मिल जाएंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में से एक क्वेश्चन आपको कंटिन्यूअसली मिलता है, याद रखो। ऑसिलेशन एंड वेव्स, इसमें से 2 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इन चैप्टर्स के ऊपर में कम से कम इन चैप्टर्स के ऊपर में आपको फोकस करके रखना है। एंड ऑप्टिकल पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव ऑप्टिक्स एंड दिस मॉडर्न फिजिक्स, ये वाला पार्ट कंपल्सरीली आपको करना पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये रहेगा कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स ये लगता रहेगा उनको कि हम लोग स्टेट बोर्ड से है, हम लोग इस टॉपिक को कैसे कवर करेंगे। एक बात ध्यान से सुनो बच्चों, 12th का स्टेट बोर्ड का सिलेबस फिजिक्स का उतना प्रिसाइज बनाया गया है कि अगर मेरे हिसाब से जितना मैं पढ़ाया हूँ उस हिसाब से मैं आपको ये बोलूँ कि कोई बच्चा अगर 12th के स्टेट बोर्ड के सिलेबस को भी डीपली स्टडी करता है विथ नवनीत के बुक्स, जैसे कि उनके एमसीक्यू वाले बुक आते हैं, वो बुक्स को भी अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो वो मोर देन इनफ आपका प्रिपरेशन हो जाता है कि आप कट ऑफ को निकाल दें। और बेसिक चीजों से, बेसिक न्यूमेरिकल्स मिस्टेक्स नहीं करने हैं। जब भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो पावर फंक्शंस के ऊपर में याद रखना है। जब भी हम लोग माइनस, नेगेटिव पावर, पॉजिटिव पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो साइन कन्वेक्शन के ऊपर में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बात याद रखो। और किसी को अभी कुछ डाउट है बच्चों तो वो पूछ सकते हैं रिगार्डिंग टू द फिजिक्स। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है बच्चा। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सोनाली मैम आप कंटिन्यू करो अपना स्लाइड। Yes, sir. Any questions in the chat box which we should answer? A wonderful session by all our faculties, physics, chemistry, maths. Thank you for sparing time for a very good informative session. And now Sonali ma'am will continue with the JoSAA admission process and what is the importance of giving JEE exams. You have any queries, please, you can ask without any hesitation. आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. We'll be able to reply. In fact, we are here to learn. We want to know more what parents think. Especially today's session, the takeaway is what Sonali ma'am spoke about, plan B and plan C. Very few people know about it. Very good question. 11th का part important है कि 12th का part important है? मैं 60-40 का रेशियो है. 60% 11th है, 40% 12th है. ये रिमेंबर करो. अगर आपका, मैं तो बोलूंगा 40-40-20 है. 20% आपको 8, 9, 10th का आना चाहिए. जैसा कैफ सर ने कहा कि ना ज्योमेट्री अच्छे से आना चाहिए, फिजिक्स के कंसेप्ट 9th और 10th में अच्छे से होना चाहिए. पियर्सन फाउंडेशन का बुक आता है. किसी भी कोचिंग क्लासेस के आजकल सब नोट्स चैट जीपीटी में मिल जाते हैं. नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको पढ़ाने वाला टीचर इंपॉर्टेंट है. तो अगर बच्चा 9th एंड 10th में अगर अच्छे से पढ़ लिया तो 20% उसका काम हो जाता है. फिर 40% उसका 11th का पोर्शन है, 40% 12th का. जैसा टीचर्स ने समझा ना, परसेंटाइल है.
मैंने कई वीडियोस देखे, मार्केट में बहुत सारे वीडियोस है जो कहते हैं कि 7 चैप्टर्स पढ़ लिया ना, आपकी बेटी को बताओ 7 चैप्टर पढ़ लिया तो भी परसेंटाइल अच्छे आ जाएंगे। मैथ्स के 7, केमिस्ट्री के 7 और फिजिक्स के 7। दूसरा वो आपकी आवाज नहीं आ रही। आप लोग ये भूल जाएंगे कि नीट और जेडब्ल्यू में फर्क है। समझ के लो मैं क्या बोल रहा हूँ। नीट में बायोलॉजी सबसे ज्यादा हार्ड आता है, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स। और जेडब्ल्यू में उल्टा है, जेडब्ल्यू में सबसे टफ जो आएगा वो मैथ्स आएगा, फिर सेकंड नंबर पे फिजिक्स आएगा और थर्ड नंबर पे केमिस्ट्री आएगा। कहीं कहीं तो अभी केमिस्ट्री को हटा के उन्होंने आईटी डाल दिया, कई कॉलेजेस ने वो केमिस्ट्री का रिक्वायरमेंट ही खत्म कर दिया। तो उसके ऊपर मुझे बात नहीं करना है, लेकिन ये कई लोगों को पता नहीं है। और क्या होता है, जो नीट का क्लासेस का जो टीचर है वही फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू सोनाली मैम, कंटिन्यू। सो जैसे सर बोल रहे थे कि JEE का इम्पोर्टेंस एंड ऑल बताए। सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड JEE मतलब सिर्फ JEE नहीं होता। जैसे हमने अभी आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया कि डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। हमने आपको ये बताया बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सेशन 1 देने का सोचते सिर्फ या सेशन 2 देने का सोचते सिर्फ, बट बोथ सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको नहीं पता कि आपका कौन सा सेशन ज्यादा स्कोर करेगा, आप कौन से सेशन में ज्यादा स्कोर करोगे, राइट? सो मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब जो है ये मेंटरिंग होती है। मेंटरशिप इज वेरी मेंटरिंग इंपॉर्टेंट। में मेंटर टीचर होना चाहिए। जैसे उन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा सोनाली मैम कि कैलकुलेशन हार्ड है तो क्या करना है। अभी कैफ सर वो बता रहे थे, मैंने उनको रोक दिया, टाइम कम है, लेकिन आप डेफिनेटली रिवर्स साइकोलॉजी हम पढ़ा सकते हैं। जो ट्रेडिशनल मेथड से अगर हम जेडब्ल्यू को सॉल्व करने जाएंगे ना, तो हम लोग को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। देयर आर वेरियस सट्टास, शॉर्ट एफोरिज्म्स, टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक द एग्जाम्स, जिससे बच्चों को का माइंडसेट बना सकते हैं, एप्टीट्यूड बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए एडीसीआई में हम लोग 3 चीज यूज करते हैं, वैदिक मैथ्स, पेंटल मैथ्स और पावर मैथ्स। टाइप करो, वैदिक मैथ्स, पेंटल मैथ्स और पावर मैथ्स। मेरा कैमरा ऑन है, दिख रहा नहीं। कंटिन्यू सोनाली मैम। मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने आपको बताया कि प्लान बी आफ्टर एवरीथिंग इज डन, फिर आप ये नहीं सोच सकते कि क्या, क्योंकि कोई भी अच्छे कॉलेज में, किस कॉलेज से आप आपका ग्रेजुएशन कर रहे हो मैटर्स अ लॉट। बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो क्लोज डाउन हो रहे हैं। बहुत सारे कॉलेजेस जो है जिनके बच्चे हैं अभी उनको कहीं प्लेसमेंट नहीं है, तो कॉलेज इक्वली मैटर करता है। सब IITs में भी इक्वल प्लेसमेंट हो रही है, ऐसे नहीं है। तो आप कौन से कॉलेज से आपका ग्रेजुएशन कर रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट, इक्वली इम्पोर्टेंट। तो ये भी गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि काउंसलिंग, जब काउंसलिंग आपने आपका मेंस दे दिया, आपका एडवांस दे दिया, अब जब काउंसलिंग की प्रोसेस है, हमने कौन से कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं, वी कैनॉट कंफ्यूज यू नाउ ऑन दैट। क्योंकि अभी मैं अगर वो भी सब डिटेल्स बताने लगूं आपको तो आपका मेंस एंड एडवांस से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। नाउ इज द टाइम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मेंस एंड एडवांस। बट जब काउंसलिंग का फॉर्म ओपन होता है तब मैं कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई करूं एंड मैं कौन से कॉलेजेस के लिए अप्लाई करूं, मेरा सिलेक्शन ऑर्डर जो है काउंसलिंग का वो क्या होना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब आता है आपका करियर काउंसलिंग एंड ऑल में। सो वी आर हियर, वी कैन हेल्प यू फॉर करियर काउंसलिंग एंड एवरीथिंग। प्लस जितने भी बच्चों ने अभी ज्वाइन किया हुआ है, यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। वी आर प्रेजेंट ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। एंड हम अभी आपको जो ये सब बोल रहे हैं, ये सब हम लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अपडेट करते हैं, इन फॉर्म ऑफ रील्स, इन फॉर्म ऑफ मैसेजेस। ट्विटर पे हमारे फॉर्म्स के डिटेल्स अपडेट हो रही होती है। तो हम लोगों का जो है सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है हमारे, उस पे हम लोग अपडेट करते हैं। यू कैन फॉलो अस ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, you can feel free to message us on social media also. We'll surely reply you. क्योंकि करियर काउंसलिंग जो होता है, ये अभी हम जो आपको कर रहे हैं, ये हम आपको करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, हम आपको गाइडेंस दे रहे हैं। करियर काउंसलिंग इज नॉट वन टाइम का जॉब। अभी आपने इसके बारे में सुन लिया, कल आपको कुछ और क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके बाद आपको कोई और क्वेश्चंस आ सकते हैं। वी आर देयर इन सपोर्ट, we are here to support you. So you can feel free to contact us anytime. This is our QR. You can scan this. स्कैन करके आप सोशल मीडियाज पे भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस यू कैन फॉलो
You can get in touch with us for any queries anytime. कोई questions है? We have last के 5 minutes, I guess. तो कोई questions है किसी के? Please ask. Also, please, student, one more thing. Please understand. We have mentioned here apprenticeship, internship, placements. With that, one more thing is very important: learn and earn. ये हम लोग emphasize करते हैं for dual education. आप JEE क्रैक कर लोगे, कोई IIT ज्वाइन कर लोगे एंड एवरीथिंग, उसके साथ साथ प्लीज ड्यूअल एजुकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ड्यूअल एजुकेशन फॉर श्योर करना. ड्यूअल एजुकेशन जो है बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक्सटर्नल कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है. फॉर एग्जाम्पल IIT मद्रास. IIT मद्रास से आप डेटा साइंस का जो कोर्स है ये कर सकते हैं एक्सटर्नली. नहीं, उनको बताओ ना, JEE के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं ना, हाँ, सोनाली मैम, हाँ, उनको बोलो वो आइसर का भी एग्जाम दे सकते हैं. बहुत आइसर कम लोगों को पता है आइसर क्या होता है. पूछो किसी को पता है कि आइसर क्या है? किसी को पता है आइसर क्या होता है? आइसर, एनीवन नो? Anybody who knows, audience, आइसर क्या होता है? बिट्स पिलाने के बारे में बताओ उनको. आइसर. और जो लोग नीट प्रिपेयर कर रहे हैं वो लड़कियां हैं तो MNS के बारे में बताओ. अगर आप JEE एडवांस CUT का एग्जाम, CUT का फॉर्म निकलने वाला है, CUT के बारे में पता है क्या? पूछो ना. आप जैसे JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डू यू नो IIT मद्रास का डेटा साइंस का अगर आपको कोर्स करना है उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होती है. यू नीड टू अप्लाई फॉर एंट्रेंस एग्जाम फॉर दिस कोर्स, राइट? अगर आपने JEE के लिए क्वालिफाई हो गए, क्लियर नहीं बोल रही कि JEE एडवांस क्लियर करना है, ऐसे नहीं, आप मेंस क्लियर करके एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गए तो IIT मद्रास जो है आपको विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन देता है. You don't have to appear for any other separate entrance exam. If you get qualified for JEE Advanced, IIT Madras जो है BSc Data Science के कोर्स में आपको एडमिशन देता है. So this is also one of the thing that you can go for. JEE अभी हम लोग ने JEE के बारे में बात की. MHCET is basically examination for engineering colleges in Maharashtra. बहुत सारे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है महाराष्ट्र में भी, जैसे TUT. ये भी बोलो ना मैम, ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, हाँ उसके बारे में बताओ. और आइसर, ये दो चीज पे स्ट्रेस करो. जी. और अभी तीसरा स्टेज है कि मर्चेंट नेवी को बहुत स्कोप है. नीट एग्जाम जो है, नीट एग्जाम्स के लिए आप जैसे प्रिपेयर कर रहे हो, वी जैसे पूछा था कि नीट के लिए भी एक सेशन रहेगा कि यस वी कैन श्योरली अरेंज अ सेशन फॉर नीट ऑल्सो. But with that, for girls, there is one more very good opportunity which is called MNS, Military Nursing Services. ये जो है ये डिफेंस में होता है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज. बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए. When we'll conduct NEET का lecture, we'll give you details on MNS also. नाटा इज फॉर आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर कोर्स में अगर आपको जाना है तो दो कोर्स एग्जाम्स होती है. JEE का पेपर 2A हम लोग ने ऑलरेडी देखा. JEE का पेपर 2A अगर होता है तो उसमें आप जा सकते हैं आर्किटेक्चर के लिए. प्लस नाटा करके एग्जाम होती है जिससे आप आर्किटेक्चर में एग्जाम एडमिशन ले सकते हैं. आइसर इज फॉर रिसर्च वर्क. आइसर, देयर आर 7 आइसर्स इन इंडिया विद दैट IISc. IISc भी अगर आप एग्जामिनेशन, इनका भी एग्जामिनेशन होता है. IISc में आपको JEE के स्कोर पे या नीट के स्कोर पे भी एडमिशन मिलता है. बट IISER आइसर के लिए उनका खुद का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, IAT. वो एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना होता है एंड यू गेट एडमिशन इन आइसर. सो दिस इज इनटू रिसर्च वर्क. BITSAT is basically BITS पिलानी जो है, इनके 4 कैंपसेस है एंड दुबई में भी एक कैंपस है. इनके वेरियस कोर्सेज होते हैं. लॉ में भी इनका कोर्स है, टेक्नोलॉजी में कोर्स है एंड वेरी गुड इंस्टीट्यूट. तो इसका भी एंट्रेंस एग्जाम आप अपियर कर सकते हैं इफ यू वांट टू मेक योर करियर इन टेक्नोलॉजी, लॉ और समथिंग. सो BITS पिलानी का गोवा, हैदराबाद, आपका एक पिलानी राजस्थान में है कैंपस, मुंबई में है कैंपस फॉर लॉ. बच्चे बैंगलोर के हैं, बैंगलोर का क्राउड है MFIRD का, उनको बोलो बैंगलोर में IISc बहुत इंपॉर्टेंट है. और केरला में जो है ना वो भी JEE मेंस के मार्क्स पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी. राइट. और JEE में वो नाइसर भी है ना, वो प्लास्टिक का क्या था नाम, वो भी JEE के स्कोर पर है ना. हाँ, वो स्टार्टिंग में ही बताया सर.
वो हाँ। चारों इंस्टीट्यूट्स वो बताए। स्पेस में जाने का रहेगा तो जेडब्ल्यू देना पड़ेगा। जी। होटल मैनेजमेंट के भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसके एंट्रेंस एग्जाम्स होती है। वी कैन गाइड यू विद दिस ऑल्सो। क्लैट इज अपकमिंग। क्लैट जो है, क्लैट एग्जामिनेशन इज फॉर लॉ। एंड जैसे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने खुद ने ही कहा है कि दे नीड 1,50,000 लॉयर्स। तो लॉ इज ऑल्सो वेरी बूमिंग सेक्टर। आगे इन फ्यूचर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉ में। AI इज डिस्ट्रॉइंग जॉब। AI की वजह से बहुत सारी जॉब्स जो ऐसी हैं जो खत्म हो रही है। सो यू नीड टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में और 4 साल है, मिनिमम 4 इयर्स, मैक्सिमम 5 इयर्स भी। आपको ऐसा कुछ सोचना है जिसकी रिक्वायरमेंट आज नहीं है मार्केट में। जॉब प्रोफाइल्स आज अवेलेबल ऐसे नहीं, जिसकी डिमांड, जिसकी रिक्वायरमेंट आफ्टर 5 इयर्स रहेगी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। सो यू नीड टू थिंक अबाउट दैट जॉब्स। सो आउट ऑफ बॉक्स अगर हम लोग सर्च देखें तो क्लैट इज ऑल्सो वन ऑफ दी प्रोफाइल्स। अभी जैसे क्लैट का फॉर्म इस साल का तो हो चुका है, बट यस लॉ का अभी महाराष्ट्र लॉ का फॉर्म ओपन होगा। देन बिट्स का भी कब क्लोज हो चुका है, बट यस यू कैन अप्लाई फॉर लॉ एग्जाम्स ऑल्सो। ह्यूमैनिटीज इज हैविंग इक्वल इम्पोर्टेंस। ह्यूमैनिटीज पहले आर्ट्स था, अभी आर्ट्स ऐसे नहीं है। इट्स इक्वल टू science and any other course. If you do your graduation in psychology, humanities में अगर psychology में अगर आप आपका graduation करते हैं, huge in demand in future. So plan B, ये हम सब आपको बता रहे हैं, ये plan B बता रहे हैं। Merchant Navy में भी IMU CET is one of the examinations that you need to appear for, compulsory all over India examination. But Merchant Navy में there are many private institutes and many government institutes. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए IMU CET सफिशिएंट होता है, बट प्राइवेट इंस्टीट्यूट लाइक तुलानी, समुद्र, एंग्लो इंडिया, उनके भी अपने CET एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। सो यू नीड टू अपीयर फॉर दैट। सो मर्चेंट नेवी इज ऑल्सो गेनिंग डिमांड। एंड इसमें कोर्स होता है DNS करके, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, DNS अगर आप करते हो, इट इज ओनली ऑफ 18 months एंड यू स्टार्ट योर करियर इन मर्चेंट नेवी। सो यस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी जैसे इंजीनियरिंग में ही आप अगर करियर बनाना चाहते हो, सो थ्रू वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक JEE CET एग्जाम्स आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए भी जा सकते हो। और अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, इवन जो रिक्रूटर्स है ना वो बहुत स्पेसिफिक हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन एयरफोर्स में अगर आपको जाना है, FCAT इज वन ऑफ द एग्जामिनेशंस दैट यू नीड टू अप्लाई फॉर FCAT आफ्टर योर ग्रेजुएशन। पहले से था कि कोई भी इंजीनियर है आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इन देयर वैकेंसी फॉर्म्स दे मेंशन इफ यू हैव डन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यू विल बी गिवन प्रेफरेंस। सो स्पेसिफिक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। IIM, this is that many people don't know. IIM में बेसिकली CAT एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, बट CAT एग्जामिनेशन इज आफ्टर ग्रेजुएशन। एंड ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है ना, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स स्ट्रीम वाले सब स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं CAT एग्जामिनेशन के लिए टू गेट एडमिशन इन IIM फॉर MBA कोर्स। But there are 5 colleges which give admission after 12th standard also. The exam name is IP MAT से आपको नलसर यूनिवर्सिटी जो है वहां पे भी एडमिशन मिलता है। IP MAT से आपको बहुत सारी और भी कॉलेजेस है जहाँ पे एडमिशन मिलता है आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड फॉर ग्रेजुएशन कोर्स। एंड दिस इज 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स इन विच यू गेट 4 degrees, 3 years का BBA, 2 years का MBA। तो इस तरीके से 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स इफ यू वांट टू मेक योर करियर इन मैनेजमेंट in MBA, so you can go for this. 5 colleges are basically इंदौर, रोहतक, रांची, बोधगया एंड जम्मू। तो ऐसे 5 colleges है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। CUET में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं इन फ्यूचर। लाइक वी आर एक्सपेक्टिंग मिड ऑफ जनवरी तक जो है CUET का पूरा फॉर्मेट एंड ऑल जो है वो डिक्लेयर होना चाहिए। तो CUET इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जामिनेशन for which you can apply 75 plus university through one entrance exam and multiple courses. एक एग्जाम के थ्रू मल्टीपल कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो एंड 75 यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, दैट इज CUET।
एंड इसमें एक और कोर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ICAR, एग्रीकल्चर रिसर्च. बिलीव मी, एग्रीकल्चर रिसर्च विल हैव ह्यूज डिमांड इन फ्यूचर, बिकॉज आप सबको पता है कि farm areas and all कम हो रहे हैं, but population बढ़ रही है, so this will have huge demand in future. And for this admission, you need to give CUET examination, and in Maharashtra there is one very good college that you can take admission in through CUET, that is TIS, Tata Institute of Social Science. So yes, you can apply for CUET examination and get this. FTII is basically for designing. Yes, designing will have huge importance in future. Film and Television Institute, इसमें अगर admission चाहिए तो उसका भी entrance exam होता है. And this is like, everything is going digital marketing, digital everything. So this will help you in future a lot. CMI के option में एक और institute है, which is ISI. This is if you are good in maths. If you are good in maths, you should go for this course. Why everyone is going for doctor? Why everyone is going for engineering? Think something different. Do your graduation in specialization in maths, because किसी भी चीज की डिमांड खत्म हो जाए, किसी भी चीज की डिमांड खत्म हो जाए, maths will be requirement every time. To make your AI strong, you need maths. To make your data science strong, you need maths. Maths will be in demand every time. So if you go for Chennai Mathematical Institute exam or Indian Statistical Institute examination, you need to go for entrance exam. If you are good at maths, you should apply for this examination. And there are many more examinations that we can talk about. External admission is IIT Madras ka data science, IIM Bangalore ka bachelor's BBA course in digital business and entrepreneurship. And there are many more courses that we can talk about. But as we are short of time, I would like to have few questions. Students, do you have any questions? Students भी है, parents भी है. I think it was a wonderful session, Sonali ma'am. Any other queries? Any questions from your part? Anything Any about questions? education? Let me know. And there's only a trailer. There are a lot of things to speak about. And we thank the MFIRD team and the team from Kanpur also, Abrar Bhai and Saif Bhai, that they joined this session. Interesting session by all the faculties. Any questions from the audience? Let us know. And this is a very important ecosystem model, which is on your screen. So we also talk about scholarships, CSR activities, NGO, need of the day, mentorship, learn and earn, placements, internship, apprenticeship, passionpreneurship, by the way, which is very important. Thank you, sir. Thank you, all the experts. Yes. So later on, we can have multiple sessions also, because as you said, you have so many things to cover. So let us plan further sessions also. So Anis sir, shall we close the session? There are no more questions. Thank you for the opportunity. Thank you everyone for joining. With this we close this session. Thanks.